Honorable Speaker, sir. Sir, Honorable Minister Saab is a very learned man. He is also a senior man, very qualified, well educated. I just want to tell one thing is that I am not a newcomer in this house, and it is not for the first time that I am speaking here. I have spoken in Andhra Pradesh Legislative Assembly several times on vote of thanks for the governor's address also. And it is not that the first time or in this Telangana state being in number 7 or with 7 numbers we have been given or allotted 1 hour or 40 minutes. No, sir. You can go and check the records. Always in Andhra Pradesh Legislative Assembly also, the MIM party has been allotted good number of times and opportunity and longer time. It is not the first time. आप 107 हैं, जरूर आप लीजिए, 2 दिन बात करिए, एतराज नहीं है इस बात पर। एतराज इस बात पे है कि टॉलरेंस लेवल किसका कितना है। आपका टॉलरेंस लेवल ही कम होते जा रहा है, टॉलरेट ही नहीं करना चाह रहे। हाँ, अगर अकबर ओवैसी यहाँ खड़े रहकर 1 घंटा तारीफ करेगा तो और 1 घंटा बोलेंगे। देखिए, अरे देखिए, हेल्दी डेमोक्रेसी में एक दूसरे को सुनने की ताकत भी होनी चाहिए। अकबर साहब, तनकीद को भी सुनना चाहिए, जब ही डेमोक्रेसी मजबूत होती है। नहीं, अकबर साहब, देयर वाज अ टाइम when I used to speak, Roshaya Saab was the finance minister, I used to criticize the government. He used to get up from his chair and come and tell me, Mr. Owaisi, you have spoken well. Very good young man, he used to say. I have seen so many chief ministers. और मैं यहाँ खड़े रह के बोल, आपने कहा कि अकबर साहब BSc में नहीं आए। Sir, Honorable Speaker, sir, नहीं, I'm not yielding, sir. Let me complete, sir. Let me complete. I'm not yielding, sir. Let me complete. Let me complete, sir. Then I'll give you an opportunity. Sir, అక్బర్ గారు ఇప్పటికైనా కానీ గవర్నర్ ప్రసంగం మీద మాట్లాడమని సూచించండి సార్. కాళ్ళ మాట్లాడుతూ పోతే మేము కూడా ఆయన చూసినాం సార్. మేము ఆయన వారు సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు రోషే గురించి మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వారు చాలా బాగా మాట్లాడేది. ఈ మధ్యలో వారికి కూడా కోపం ఎక్కువస్తున్నారు అధ్యక్ష. అప్పుడు చాలా బాగా మాట్లాడేది. ఎందుకో వారికే కోపం ఎక్కువస్తున్నారు, మాకు రావట్లేదు కోపం. आपको गुस्सा ज्यादा हो रहे, हम नहीं हो रहे. आपको टॉलरेंस कम हो रहे, हमको नहीं हुआ. जिसपे ऊपर आप गुस्सा है उस पे ऊपर आइए. आप हमारे ऊपर गुस्सा है तो क्या आता. దయచేసి అధ్యక్ష గవర్నర్ ప్రసంగం మీద మాట కంక్లూడ్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి. साहब, आप जब बोलते हैं तो मैं जवाब नहीं देना साहब. नहीं, बार सर देखिए साहब, अब अगर मिनिस्टर साहब उठ के बोलेंगे मैं जवाब नहीं देना. साहब, आप सीनियर मोस्ट आदमी हैं, आप जो भी बोले आप तारीफ करें तो मुझे भी आपकी तारीफ करने दीजिए पलट के. अकबर साहब, नहीं सर, मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूं. मिनिस्टर साहब ने कहा कि अकबर साहब आप BSc में नहीं आए. सर, मैं नहीं आया हूंगा, क्या मेरा रिप्रेजेंटेशन आप तक गया नहीं गया? कितने दिन असेंबली करना हम बोले या नहीं बोले लेटर में? कौन से इश्यूज को टेकअप करना बोले या नहीं बोले? शायद मिनिस्टर साहब को नहीं मालूम, उनको भी कॉपी भेज देता हूं. आप बोलिए साहब, हम क्या बराबर वहां पे अपना रिप्रेजेंटेशन दिए या नहीं दिए? सर दिए सर या नहीं दिए? सर हम दिए, बराबर दिए. हम नहीं भी आए तो हमारे मसाइल को रखे, हम नहीं भी आए तो क्या मसाइल को उठाना है वो भी हम बोले, हम नहीं आए तो उसकी वजह भी बोले. आप बोल रहे हैं कि आप नहीं आए. हाँ, हम बराबर भेजे अपने मसाइल. मैं कर रहा हूं सर, मैं अब इसमें कंक्लूड कर रहा हूं. ये लोग के पास में एक सबर नहीं है साहब कि खामखा के उलझना चाहते हैं. अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन. दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान. आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज. थैंक यू.